Okay, I do have some 3-4 errors before I went on the streaming. Should I share the link then? Yes, go ahead. Okay, let me switch to the charts and we can. You can hear me, right? Yeah, I can hear you. For some reason, my camera is not working. Yes, it is showing NVIDIA is not taking up camera. Guys, there is some issue with the camera. I will sort it out after the stream. So till then, let's just start. So we have this 30-minute order block right here, and price already tapped to this 4-hour order block. If we close below 47, expect price to tap around daily pivot area, and then we might get active from this order block and daily pivot. So we have 17K FUG, daily pivot, and this 57K order block, 31 and 30-minute order block as well. So 3-4 कंफर्मेशन है यहाँ से बाय एंट्री करने के. ये तो पहला सीन हुआ. जब वीडियो कैप्चर चली नहीं रहा है तो I'll just turn it off. Remove that. Yeah. I think it's on now. So नहीं चल रहा भाई, अभी बाद देखेंगे. ओके, अपने पास नेक्स्ट पे है EU. ही ऑलरेडी कुछ ज्यादा बेरिश मोड में लग रहा है आज. तो पहले डिप्स से देखते हैं, तो चलते हैं पे. हाँ, सो कल का डिप्सी बुलिश था जो ये संडे ओपन था, ऑलरेडी गैप है यहाँ पे. कल बुलिश था, मंडे ऑलरेडी बुलिश चल रहा है, मोस्ट ऑफ ये फ्री कर देगा. उसके बाद भी अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये रेंज क्लियर है. इसके ऊपर वाले कुछ इसको ये ड्रॉ करते हैं यहाँ तक. ये रेंज क्लियर है. उसके बाद अपने पास क्लियर ट्रैफिक टू द लेफ्ट, तो EU GU कैन लिटरली ड्रॉप मोर. तो उसके अकॉर्डिंग प्लान चेक करें अपन डिक्सी अकॉर्डिंग. बट डिक्सी भी डेली बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश है,
अब ये चैनल सा दिख रहा है एक टेम्परेरी सा, अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट करती है तो फिर अपन EU एंड GU में सेल को प्लान करेंगे। ऐसा कुछ तो वॉलेट लगा लेता हूँ यहाँ पे। GJ गैप वैप है, कोई रीड करने की इच्छा नहीं मेरे इसको। सेम विद GU सॉरी UJ, और ये क्रिप्टो एरिया तो इसमें कोई सेंस नहीं है। अब आते हैं इसके अंदर, GU के अंदर। ये यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है इसी कंफर्मेशन के बाद, तो अपने पास ये रेंज है सेल करने के लिए यहाँ तक, ठीक है। Yes, makes sense. ये तो हो गया अपना GU। आना एंड EU का सेम वेरी सीन चल रहा है, तो उसमें भी कोई इसके नीचे देखते हैं, अगर ब्रेकआउट होता है तो अपन नेक्स्ट रेंज ट्राई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 2 सीन हुआ, एक EU GU डन। HC बुलिश है तो बाय का प्लान नहीं है, बट इन केस अगर बाय का सीन बनता है तो अपन वही सिंपल सा एक ये है, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो अपन बाय ट्राई करने की EU पे कोई, वो चाहे अब हो चाहे NY में हो चाहे कल हो, दोनों ऑप्शन वैलिड है। तो EU के अंदर ये प्लान है, जी हो चुका है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के अंदर 40 पे एंट्री है, मैं एंट्री सेंड कर देता हूँ फिर से, नहीं तो मैं स्क्रीन पे मार्क कर देता हूँ। तो 3940 SL39 कितना था? Uh, 26 30, 26 26.4. no 90, which I can. Is it? This is the lowest candle. The low of this candle is 27.21 and counting spread of 3 pips. 26.90 is this. Okay. 190. Okay, yeah. 40 to, 40 to 26. So ये एंट्री है एंड देन विल टारगेट 4K एंड वही DP1 रहेगा अपना 50 के ऊपर। 3922 वैलिडेशन नहीं होगा, 3922 क्यों होगा वैलिडेशन? तो हम तो ऑर्डर फ्लो पे चल रहे हैं ना। आप देखो ये ट्रेड है, ये ऑर्डर फ्लो पे, तो लोएस्ट कैंडल इसके चल रहे हैं प्लस 3 डिफरेंट के, बस यही चल रहा है। इसको काम नहीं करना, मैं इससे मेरे इसको कंसर्न ही नहीं है अपना, अपन सिर्फ ऑर्डर फ्लो पे चल रहा है। एंड उसके बाद वी विल लो सम अराउंड, यहाँ पे एफयूजी प्रिंट हो गया 9K की एफयूजी है यहाँ पे, ये On 4 hours. No. नहीं 30 मिनट पे ना। तो यहाँ पे है अपना जो 9K FEG. ऑर्डर फ्लो प्लस AUR प्लस 17K एफयूजी प्लस 30 at order flow. That's the entry we have. So we have to that DP1 and that is also as into B. And DP2 for your link upon 56. 3956. Then DP3 they will open towards 66 and then say before. Back you take link about that. Yes.
सुबह तो ऐसा लग रहा था ना कि भाई गोल्ड बस फिर से फोर्थ के एंट्री मिस होगी, ऐसा नहीं होता, गोल्ड जाएगा बट थोड़ा तुम्हें थोड़े हार्ड टाइम देके आ, so- और ये प्लान है, बट उससे पहले भी कोई बुलिश स्ट्रक्चर मिलती है, रिजेक्शन मिलता है, तो फिर अपन पहले विन पे कर सकते हैं। विजय क्या बोल रहा है भाई? लेना है तो 6 तो दैट्स इट। ये मैं डेबिट कर देता हूँ, बेस्ट ट्रेड। और गाइस इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि अपन ये ट्रेड एक्टिव ही नहीं हो लंदन के अंदर, तो ज़्यादा जज्बात तो नहीं बना, एनवाई मिल जाएगा कुछ ना कुछ। Minute, I will send this straight to the group. और अच्छा नेवल्स पहले ट्रेड आईडी सेंड कर देते हैं। So, Oh, what do you think, we will activate or not? oh, from the way it is falling, I do hope it gets. I think it will activate us. So those this audio that will be controlled purpose. Yeah. Oh, Check we do check have two, zone by zone. we have 2 hour order block as well right here. And that's it. Oh, it tapped to this 80K FVC anyway. So 2 hour order block. So we are at nice zone. So 4 hour, 2 hour, 30-minute order block, 100K and 80K FVC, 17K of 30-minute. So that's a good zone. If we get a reaction from this area, else
Then I'm expected then we drop it low and fill that daily gap around 90 area, 38, 90, and then we can swing buys there from again. Yes, you're saying something, Aaron? Huh. If you check zone by zone on 30-minute and on 15-minute, it is proper breakout, retest, dropping, breakout, retest, dropping. So simple, let's just go on 30, ADR you tap to 50 today. So this is the current resistance we have today. ADR 50, I'm not exactly sure if the ADR was 50 itself, because it's a dynamic area. So as the low gets created, the ADR keeps changing. Morning, I was not exactly sure where the ADR was. So this one is the breakout right here. I like it. Yes, exactly. That's one thing which I was thinking about. And then here next zone, and then here next zone. Yeah. So see, right now the candle is actually between those two zones. This is where I think we could have a good reaction from. And yeah, Yes. our target of 50 actually makes sense now. What did Yeah. Was zone, even this is nice, even that would have won out. So outly, we have this and then we can reduce it to this area, then it will get right at here. So it will go to slower at lower time frame 115 to 15 is what the breakout right here. That's a big jump. 15 now here's zone 2. Now you have, let's make it a zone 3 and then now that and this one. It, what is called session ID? which indicator do you want? It, that session volume profile. Oh, yeah, I have it actually. Our entry of 40 makes sense in that because, oh, nice. Okay. Uh, We have a EMA 20 coming up over there at 34. And at 36 is the six. yeah, that it also we do have this volume profile. So that is also good, John. And if we look at this angle, this was a good breakout to be honest. Somebody In the try, morning, yeah. somebody try to take like this. That is where. Yeah, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 10 breakout at 56. Now we're at 44. So that's a nice one. You do have order block right here. Dixie also order block right here. So Dixie on stab this order block and EU about to tap. It is amazing. It's 20%.
So it looks a breakout on 15. 15, it flips from here, then we can tap this. तो कितने ऑर्डर लग रहे हैं 15, 30, 2 hour, 4 hour, daily pivot, EMA is It also looks there. like a high, Mhm. yeah, it looks like a high probability area for a reaction. Yeah. I went to gym and did some legs today, so I'm now more tired. Slept late yesterday, so I woke up a bit late today. And then I woke up and then I slept again. You love when you sleep as well. And Yes, that is true. I mean, like, even like sometimes when I don't sleep much, feel weird. You're sleepy, some lethargic, and then what do you be? Your your trades does not make sense now. You're just trying to make a trade. These Yeah. kind of things happen. बोला जल्दी से ले लो यार ट्रेड खत्म करो बस हाँ. और फिर तुम लॉस करने के बाद फिर से वो ट्रेडिंग करोगे Well, I have enabled the ultra low latency now. We don't have much of what do you call it delay now in stream. Buffer, yeah. So I'm checking it because let us say move it, run to yes, we have less than 5 second delay now. That is very nice actually. This is what we need actually. बस हो गया and ऐसे ही random Google search. I need to fix my magic keys actually. Not mine, but But yours. yours, bro. Now they updated it. They updated it. Now you can set up TP1, TP2, TP3 automatically that and then the level you should go to SL2B. It's a good tool. Okay. And they also have this physical version of this that costs something around I think 200. But Okay. that's nice to use That's if you're doing scalping, break even SL2B. yeah. No, my for some reason in my laptop, in my system, there's no like it is not showing up actually. It shows that no input devices. So quite odd. Oh, finally I fixed the camera. Oh yeah, nice. Just gold activate me, give me 50, 60 pips. So I can So, after looking at the data, I have decided is the initial, when we log some partials, if we had a good trade, I'll only log 30%, not 50. Yeah.
And guys, only risk in proportionate to your account size. I don't recommend you risk more than 1%. And if you want to risk more than 1%, then at least you should have buffer of 4 or 5% in the prop accounts. So in case things go south, you won't lose much. If you're only starting a prop account and you are at the same account size initially, like a 10K account and you risk 2%, this trade we took a loss will be drawdown. If you want to risk more, at least have 4 or 5% of buffer. Even if you lose the trade, then you're still in the profit side. But always don't fall for this, 2% risking, 3% risking, just this 1%. And you'll be fine. Because any trade, any time can go against us. Trump can open his mouth, some news can came, price can literally drop 100, 200 pips. I think we're back in that time. Now, by the way, this breakout works fine. This breakout is also nice. 54, 60 PSL to 130. We want to do right here. Did we got active? No. Missed by 10 pips again. Yes. Oh, I am at other chart. So sorry guys. So now this is the actual thing. And what kind of news we have today? Today is also quiet day. Bailey speaks, Lagarde speaks, nothing. Tomorrow, sorry, I'm not wrong that. Today is 7th, right? So we have China holiday off. And then I think couple of FMC member will speak. Mostly were New Zealand interest rate, JP, Roy, Gordon speaks, nothing. I think it went without us. अबे यार ये रोज का हो गया यार. But our entry is logical entry only. Did some mistake? You have to cross check. No, it didn't even come in the range of FUG. The entry should have around 39.50, but we only took 5 pip above. And उसके बाद क्या है 15 minute? नहीं bro, our entry is fine. And even this pivot level is 30, 38, 33. So that is bit below. Yeah, just chill. If you activate us, fine. If it doesn't, there will be more trades. USD का यही same है. If we had a breakout over this, we can take a buy. Breakout below, we can take a sell. And let me check USD at this angle. If you look at this volume profile, this is the yesterday volume profile. Market open respecting this point of control area dropped. Now it went to the low of that low value nodes on weekly volume profile, tapped some reaction. Let's see. GJ.
Nehal Hope Trump's open his mouth and putting a fair. Where you want to put it? Buy? Trump का भाई कुछ पता नहीं. And then 2 hour order load is active. हाँ भाई रजित 2 hour भी active है, 4 hour भी active है. But अपनी इन पे थोड़ी नीचे है. यार हम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते हैं ना तो 4 घंटे की एंट्री ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी होती है. 4 घंटे की एफिजी रेट अराउंड ही थी. हाँ तो 4 घंटे की एफिजी रेट चेक करिए. यहाँ थी 49-50 में एंट्री होती बट अपन नहीं की वो एंट्री. ट्रेड स्टिल वैलिड है ऐसा लॉजिकल ऐसा 25 इंक्लूड एवरीथिंग. मतलब अपनी एंट्री Yeah. 4 घंटे में नहीं है. अपनी एंट्री है 2 घंटे में नहीं है अपनी एंट्री. आई थिंक ये प्योर टैप हो जाए तो वी विल बी फाइन. और अगर ये अपने बना पुश होती है तो भाई फिर अपन एंट्री लेंगे अब ये 48-50 के अराउंड क्लोजर के बाद फिर रिलीज कैंडल स्लिप होगी इस पे एंट्री लेंगे. Yeah. बट यूजली लास्ट कपल ऑफ डेज में ना 2-3 वीक से गोल्ड हमेशा पीरियड के टैप हुआ है ना. Weekly pivot has not been tapped in a while, but नहीं वीकली yeah, नहीं डेली पीरियड तो अगर टैप हो रही तो उसके पास once in गोल्ड a थोड़ा हवा अराउंड कर once ही जाए. yes, once in a while, once in a week it does tap and give you good reaction. Let's just wait. नाउ आई डोंट फील गुड. कल अपने कितने विप से एंट्री मिली थी? 4 विप से ना. आज अपन 10 विप. Yeah. आज अपन 10 विप से मिस हुए. जाने ही नहीं आ रहा हूँ. 47 गया था ना अभी ये. बेटा Yes. अलर्ट लगा देता हूँ इन केस रिपोर्ट एक्ट. भाई तेरे को विजय कुछ कमेंट पे गंदा गंदा बोलता बात कर ले भाई. It's fine. You can hear me now. फिर भी ठीक है. You can hear me, right? यस आई कैन हियर इट. Then it's fine. आई इंक्रीज योर वॉल्यूम टू लाइक लिटरली फुल. अभी भी उसका आवाज मेरे तो भाई सेंड कुछ कर नहीं सकते. Yeah, that I do not know actually. I cannot shout over here also.
अच्छा विजय ठीक इतना था भाई, उसकी वॉल्यूम मैंने डबल कर दी है तो अब आनी चाहिए। Okay, perfect. Well, I don't speak too much also. That's another thing, right? Fine. Like right now, there is nothing अबे say also. कुछ है इन देखो, किसी का वो सवाल जवाब आई कैन आंसर, बट ऐसा कुछ। Yeah. Manoj, let me ask you one thing actually. So I was talking to you zone to zone, right? हम्म, So right now it's a breakout. It came to the last zone. हम्म, It is not closing below the last zone. Uh, so right now it is at a very good resist support area. So और if a bullish closure comes over here, can we take a trade on 30-minute? I mean, ओके सो वी आर ऑन 30 30-minute. मिनट, 30 मिनट के जोन अपने को डिफाइन करने पड़ेंगे, तो दैट से देखो एक यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये सपोर्ट है, और तो सपोर्ट सपोर्ट है ना, वी डू हैव ब्रेकआउट Yeah, कपल ऑफ रिटेल्स, इट गोज टू द अपसाइड एंड यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। बट 30 मिनट पे एक yeah. सपोर्ट यहाँ पे भी है, एक सपोर्ट ये हो गया डन। हाँ ये हो सकता है, ये कैंडल स्टिल इस जोन के नीचे है, एज नो एज वी आर नॉट क्लोजिंग ओवर 56 और समथिंग, क्योंकि अभी बुलिश कन्फर्मेशन क्या है बस कुछ नहीं कि बट दिस कैंडल विल शूट अप। Yes. और नेक्स्ट जोन के रेंज कहाँ तक है, यहाँ तक एटलीस्ट इसको यहाँ लेके चलो, The below. Ooh, है ना। और ये प्राइस अभी भी okay. एक सपोर्ट यहाँ पे है एंड एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, तो प्राइस स्टिल एट एक नाइस जोन है ना। इवन तुम इसको रिलीज करके यहाँ ले आओ, अब तुम देखो कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा एक रेजिस्टेंस यहाँ है, E एक ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट, यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट, तो ये एक जोन की रेस्पेक्ट हो, तो ये भी एक माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो गया। zone. एक प्राइस Yes. इस रेंज के अंदर है ऑलरेडी, तो ये अब इसके नीचे क्लोज होती है देन वी कैन सी टू द नेक्स्ट जोन। बट यहाँ के ऊपर बाय करने मेरे को फिर यहाँ पर एक जोन हो रही है, यहाँ पे हुआ था ना कुछ, तो Yeah. यहाँ पे So बाय कैसे, that's what I'm asking. Right now, if a green candle gets closed, can we take it at the flip of the candle? I know the SL would be quite big, but yeah, like 80 pip, I'll the prefer this, potential reward is just 60 people. I'll prefer this area to be honest। Okay. अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर बाय का सीन देख Yes. सकते हैं, इसके ऊपर वापस ट्रेड कर, यहाँ ट्रेड लेने का सेंस, यहाँ ट्रेड तो एटलीस्ट इसके ऊपर पड़ जाए 50 के ऊपर, बट फिर एसएल तुम्हारा इन प्रपोर्शन रहेगा, वहाँ यहाँ क्लोज होती है तो एसएल तेरा गया कितना 100 पिप का, रेंज कितने ऊपर Yes. 60-70 पिप की, ऐसा कुछ है। और Yeah. इसका भी क्लोजर होने के बाद वही विक के ऊपर इंटर लेंगे जहाँ भी इंटर लेंगे, और गाइस फिर गोज आवर 100 पिप्स। But yeah, 100 pips, as in we never got activated. So वो अलग है, बट आई प्राइस ऑलरेडी टैप टू दिस 4 आउट। अब सीन देखो, क्योंकि अपन उसके अंदर आ चुके हैं, अपन 4 घंटे का ऑर्डर लोग जोन के ऊपर है, ठीक है। इसकी एफईजी का आती 50 के ऊपर, लेकिन बट ये ट्रेड तो स्टिल वैलिड ही है, yeah. क्योंकि है तो टैप तो ऑर्डर लोग की हुआ है, तो ट्रेड तो तुम्हारा हो गया, बस ये जो ट्रेड थी ना ये काम कर गई। बट अब 4 घंटे से काम नहीं किए, वी बीन हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ कितना हो गया 90 पे ड्रॉ डाउन, वैसे ही लेते है ना। और फिर 2 घंटे का ऊपर ये एफईजी थी 80 के की, यहाँ से इसने रिएक्शन दिया, दैट्स फाइन। अपने ट्रेड नीचे इसने थी कि अपने पास यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन थी, प्योर था ना नीचे 9.3 था ना, Yes. इतने स्टिल एक्टिवेटर्स, कोई वो बड़ी बात नहीं है, तो बस अभी और क्या रखें, देखते हैं क्या होता है। एंड उसके बाद आते हैं अपन, हाँ तो वो बाय का सीन ये है, इसके ऊपर होगा ना 59 पे ऊपर, यहाँ कुछ बाय तो उसी का रहेगा, यहाँ पर इटली जोन हो गया, ये डिस्टेंस आ गया, तो ये आ गया, ये चलना है रिस्की जोन में चलना। और फिर ये देखो ये 4 आवर तो क्लोज हो रहा है ना, अब इसका डाउट है ये क्या हो गया, ये तुम्हारा कौन सा पैटर्न बन गया, इवनिंग स्टार काइंड ऑफ, सो वी आर बुलिश काइंड ऑफ अगेन बुलिश विद लो वॉल्यूम एंड ये बेरिश, तो ये 4 घंटे बेरिश में प्रिंट होने वाला है। उसके बाद क्या हो सकता है कि नेक्स्ट 4 आवर कैन लिटरली प्रिंट डाउन, पोटेंशियल है ना इस चीज का। तो Yes. अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है अपन, लेट इट फ्लिप, टैपर्स एक्टिवेटर्स, उसके बाद अपन वो 50 पिक के ऊपर एस एंड ब्रेक कर देंगे, बस मैंने सिग्नल तो लिखा है उसके ऊपर, सिग्नल तो अपना ये है ये विल डू एट 50, बट 50 के बाद बहुत होता है, एस एंड टू कैंडल लोग नहीं चले आएंगे,
मतलब रिड्यूस करो, मतलब जो भी लॉस लेना है ना, प्लान लॉस है, मतलब अगर कोई उसका ऑप्शन है ना कि तुम लॉस कम कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे फिर? जैसे कि इसका सेम लॉजिक चलता है, जैसे कि ऐसे समझो कि ये अपना एक कोई एक्टिवेशन जोन है यहाँ पे, ये ऑर्डर बुक पे एक्टिवेट हुआ था, या ठीक है, अब कोई कैंडल को लो था, अब हाँ गया कुछ नाइस, मेजोरिटी ऑफ द टाइम पे अगर कोई ऑर्डर बुक को वो देवा ना हो रहा है रिएक्शन, तो प्राइस या सिंगल टैप लेगी एंड देन इट कैन शूट अप टू द अपसाइड, ये होता है ना। अगर प्राइस 100 के यस। ऊपर जाके वापस तुम्हारे यहाँ आ रही है, तो अब लेस लाइकली है कि इसकी रिस्पेक्ट होगी, प्राइस कैन गो डीप पुश डाउन अपन आउट हो जाएंगे। तो फिर मैं यूजुअली क्या करता हूँ, बस यहाँ तक ठीक है, अगर प्राइस नीचे भी आ रही है ना तो टैप अगेन एंड देन शूट। तो अपना जो ऐसा प्लान मान लिया 100 पिप का था, जो भी है, इट कैन बी ओनली 20 to 15 पिप्स 30 पिप्स जो भी है, तो अपन ऑलरेडी 60-70% सेव कर चुके हैं। ओके, मेक सेंस। या हाँ, तो बस ये नहीं लोगे ये चीज़, कभी कभी इसमें होता है अपने इंटरनेट हो जाती है, वो अलग है। एक सेकंड गाइस, let me turn on the camera and mic. Manoj, you have another question. Pratik, your question of two candle retracement on 1 hour, that is my logic is simple. I don't see a two candle retracement on the area which you have sent me chart for. I don't see, there is always tall wicks and there is no candle which is closing below that wick. So I don't see it as a two candle retracement over there. The area which Pratik is talking about is from uh, 3950, no, 3949 to 3922. So in this area, I don't see a two candle retracement in 1 hour. You would see a breakout structure because tallest wick, there's a high wick and the bottom of that has been closed. So you could consider this as a retracement, but I don't, I would still wait for two candle retracement. Okay guys, I'm back. हाँ तो कहाँ था नेहल? I need to reduce SL after 50 pips, just playing this part when I can reduce risk and when it's too early to do so. Manoj, when you go, did you mute me and go? No, right? You know, I was on limit, I put myself on limit. Okay, 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 okay. Okay. हाँ तो Because नेहल I देखो, did. सीन ऐसा होता है कि जैसे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, तुम यहाँ एक्टिवेट हो गया, अगर तुम स्कैल्प कर रहे हो तो सबसे सेफर ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हें 30 का रिएक्शन मिल चुका है ना, जैसे ओनली 30 समथिंग, इससे बैड थी, तो 30 के बाद तुम ऐसे तो ब्रेक इवन कर दो, टारगेट रखो 50 पिप्स का। तो क्या भाई, यार ड्राइंग करता हूँ ना मैं, ठीक है। let me let me draw something nice. Okay. सो जैसे तुम स्कैल्प कर रहे हो और तुम्हारा ओवरऑल टारगेट है 50 पिप्स, डन। तुम यहाँ से रिएक्शन हुआ तो ये तुम्हारा एक्टिव जोन हो गया डन। देन तुम अराउंड 30 पिप्स तुम एसएल टू ब्रेक इवन कर दो, एंड 50 पिप्स तुम्हारा टारगेट है जो भी है। अब इस ट्रेड में क्या है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि तुम मल्टीपल बार ट्रेड से आउट हो जाओगे अगर प्राइस दोबारा एंट्री पे आई ना, बट ये सेफर वे है, ब्रेक इवन इज बेटर देन टेकिंग लॉस। अब तुम कोई ट्रेड पे एक्टिव है, प्राइस दोबारा एंट्री पे आके इस जोन को ब्रेक करती है, तुम्हें फालतू का लॉस लगेगा। अगर ट्रेड को ऊपर जाना था, इस ऑर्डर ब्लॉक में लिटरली कुछ अच्छा वॉल्यूम था, तो पहली बार करेक्शन मिल जाएगा। और जब ये अपन ये लॉन्ग ट्रेड करते हैं ना, जैसे कि अभी 100 पिप्स का टारगेट लेके चल रहे हैं, 200 पिप्स का टारगेट लेके चल रहे हैं गोल्ड के अंदर, 50 पिप्स एक अच्छा रीजन है कि यहाँ तक तुम ब्रेक इवन भी नहीं कर रहे तो कुछ पोर्शन क्लोज कर दो, क्लोज 30% 50%। इन केस अब तुम्हारा ऐसे नेट होता है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से ट्रेड एक्टिव हुई है, ये एस एल अपना, वो टारगेट अपन 200 पिप का लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्राइस कुछ ऐसे आई, तुम्हें एक्टिवेट की, अब कुछ रिएक्शन आ चुका है 50-60 पिप का, इस
टाइम पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस एसएल को तुम यहाँ ले आओ इस जोन के नीचे, ठीक है, या तुम ये नहीं लेके आ रहे तो एटलीस्ट तुम यहाँ 30% या 50% क्लोज कर दो। इसमें तुम्हारे पास बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट भी दोनों ऑप्शन है, प्रोज एंड कॉन्स। बेनिफिट ये रहेगा कि इन केस ट्रेड रिटर्न करती है तो तुम्हारे हाथ ही लॉस लगेगा, ठीक है। तुमने यहाँ 50% क्लोज कर दिया, इन केस अब तुम स्टॉप आउट हो जाते हो इसके अंदर भी, तो तुम्हारे हाफ लोग की हाफ लग गया तो ब्रेक इवन हो, है ना। बट तुम इसको अगर यहाँ ब्रेक इन कर देते हो, थर्ड केस, अब इसमें ये होगा अगर प्राइस वापस यहाँ नीचे आके ऊपर चल जाती है, जैसे आज सुबह हुआ था 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के साथ, प्राइस वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आई थी और देन शूट अप अगेन, तो फिर तुम पोटेंशियल मूव मिस कर सकते हो। बस ये, पर इसमें क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच है, प्रोप अकाउंट पे ऐसे चलता है। तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि 1 to 4 1 to 10 की ट्रेड, 1 to 2 1 to 1 1 to 2 की ट्रेड अच्छी फाइन है, वो मिल जाएंगे, उन पे ट्रेड करो। और स्टार्ट में एसएल तो ब्रेक इवन कर दो, उसके बाद में तुम्हें लगेगा हाँ भाई ट्रेड में पोटेंशियल है, देन डोंट मूव द एसएल, जस्ट टेक हाफ एंड देन लेट इट राइड। जहाँ तुम्हें नॉर्मली 1% मिलता है, यू विल गेट ओनली 0.75%, बट इट्स मोर सेफर। ऐसा मैं करता हूँ, बट यू कैन ट्वीक हाउएवर यू वांट टू ट्वीक। तो अबे बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा बुरा। Why? Oh yeah, but it's fine. My next dialogue might actually make you annoyed. Just वेट फॉर द नेक्स्ट वन। no, my next dialogue might make you annoyed, but just bear with me, okay? Like one great person told, बस many नो there are नो lots of नो fish. Yeah. नो, डोंट स्टार्ट ऑन द। I told you, I gave you a disclaimer before talking. This 30 is about to close. So this looks like engulfing, price goes back in the range. How big of an SL lift trade will give us? 120 pips. And this 30 zone is right completely. If we enter from, okay, we have to enter from 54 if we enter in this trade. 54 is, तो गोल्ड में 100 भी पैसे चल जाता है ना मजाक मजाक के अंदर। यू डोंट इवन मूव, कितना मूव हुआ अभी तक? 7। चीज इज नथिंग।
इस 15 क्लोज होने दो गाइस, ट्रेड तो अपन लेंगे. अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज होती है तो वी डू हैव दिस 8K एफिलिंग. यहाँ से अपन एक बाय ट्राई कर सकते हैं स्कैल्प के. Yes. और ये उससे पहले ड्रॉप हो जाती है तो वी कांट डू एनीथिंग. 5 minutes nothing. 3 minutes. Okay. Uh, तो उसके बाद आर यू गाइस रेडी फॉर बैटलफील्ड? yeah, I am. I just have to send one email in the morning. I will. Yeah. Do you think NYC would move a lot then? Like Asia did not move much. London also dropped a bit. ताकि फिर से बोलो मैं No, सोच. NYC. हाँ Do you इनवाइस. think NYC would move a lot now? Because Asia did not move too much compared to yesterday. But again, it's just second day of the week also, right? देखो अब Yeah, ये it's just second day अब of the तुम week. इस 4 आवर को देखो, सीन गड़बड़ सारे यही लग रहा है. दिस 4 आवर, चलो मैं क्या बोला 4 आवर अब है. ये 4 आवर देखो, ये 4 आवर Yeah. अभी काइंड ऑफ अनगल्फिंग कैंडल क्लोज हो रही है. ऐसा होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन पोटेंशियली कम मोर डाउन है ना. मैं तो कहता हूँ यहाँ पर आए. For our engulfing candle. We have 24 minutes more for the candle to close. हम्म. To be honest, we shouldn't have made this into. But Manoj, in all fairness, where we will end up from 4 hour order block? No, but there only the improvement part. We could have it went till Come to lower 40 order and block. 7.
So what lowest of this candle was 41.05, right? We would have taken entry around this FUG, but if we enter on the FUG, then we should have entered on 4-hour FUG. That is also a valid point. Yes. How come we not missed this next tag? Thing is, on 4-hour, the FUG was 100K, right? So that if we go to Yes. hourly, that's a 120. Yeah, 121K, something like that. that is how much 30 30K or per hour 30K. per hour basically. Yeah. Now it was 40K. Okay, I'm talking dumb now. We missed it. That's it. This we can try. This if we close like this, that FUG is nice. So this FUG, but as will go same 80-90 pips, and then we'll take this trade. So let it close and we'll see. 10 minutes, nothing. DXY shooting up, yes. But still haven't gave breakout over this channel. Mm. Okay, this GU trade might get that as an entry soon, so I'll send the signal on Discord. And if you look at gold by other way, so look at like this. Go to session on 15, a bit lower. So this is the whatever low it was, leave it. You know? If we take out this high, that would be a shifting structure. Yes. That would be potential choke, and then we can enter on this, something like that. Okay. So we do have a couple of options in there, but there is no the single Okay. FUC. विजय बोला वेरी लडल माहौल शांत क्यों इतना भाई तेरे ने कर रखा मैंने माहौल शांत ठीक है बॉयज तो एक काम करो आई हैव टू टेक सम डिनर स्ट्रीम चालू है एंड अलर्ट एक यहाँ लगा देते हैं एंड फिर एक अलर्ट यहाँ लगा देंगे अपन तो अगर 5 मिनट में ये कैंडल ऐसे क्लोज होती है तो वी डू हैव सॉलिड एफवीजी ठीक है तो इसकी एंट्री कहाँ ले सकते हैं अपन 49 एंट्री 50 पे ठीक है Yeah. ओनली आफ्टर दिस कैंडल क्लोजर इन 5 मिनट्स तब तक एफईजी Great. बचती है तो अपनी एंट्री है और तब तक नहीं Okay. बचती है तो फिर अपनी एंट्री नहीं है Fine, fine, fine. Yeah. ठीक है Yes. ऐसा कुछ सो एक Scalp ये right? Yeah. हाँ स्केल पर है ना बस अरे फट से 30-40 मिले फ्री हो फिर
अबे फोरेक्स एक्सपो का विजय मेरे पास वो था, मैंने बुक किया था उसका कुछ, बट सिर्फ कौन है वहाँ, क्या करेंगे जाके, तो गो फॉर बोट तो We could have बोट। gone. We should have gone actually. अरे बट वहाँ जाके करना ही क्या है, बोट टू बोट, उससे मिलो देन कुछ खास नहीं है। अबे ट्रेड करो ना यार, एक बार उस लेवल पे पहुंच जाएंगे फिर चलेंगे, बट अभी अपना कुछ है नहीं, अपने कुछ रिजल्ट का कुछ है नहीं वहाँ Okay, पे, yeah, that no, fair enough actually. That's a very valid point. अपना वेस्ट ऑफ टाइम है वहाँ पे। और फिर अपन जा भी सारे अयास रहे हैं ना वहाँ, फिर नहीं वो चलो आए हैं तो यहाँ भी घूम लेते हैं, ये भी कर ही लेते हैं, ये तुम 2 दिन का ट्रिप 10 दिन का बना दोगे, कैंसिल। तो गाइस ऑन 3 मिनट्स अपने पास एक और बाय लिमिट है, तो है वो है 50। तो 3950 in next 2 minutes। इसका लो है 41.05, तो ऐसा अपन ले लेते हैं 40.70। अरुण बोला लैम्बो आएगा करके, अरुण चली जाएंगे अपन, अपन तो चलाएगा कौन उसको। No. Arun is the only one who So you drove. guys, Arun is the only one who drove you Ferrari guys, here. you guys think that you can go to Dubai Forex Expo without me? ये पॉइंट भी लीजिए, थोड़ा ओवर एस्टिमेट करता है अपने आप को। It's a joke basically. I have multiple things to say, but I'm controlling myself. After the stream guys, After the stream, yes. we would be running in heavy profits right now. I think यही तुम्हें But lowest मिले, unfortunately, we are not. यही तुम्हें lowest point मिलेगा, and even if this hourly close like this और इसके थोड़ा ऊपर होती, then we are in much better position. Actually, it could have wicked down 10 more pips and activated us. I'm See now saying even that's all. look at this, there's 45-minute close in 15, that would also give a nice engulfing candle. 40 is nice, this 35-minute close good, 30 also close good. And we do have a nice reaction. So I think if we count this pullback, but this Manoj, it was a 61. morning star on the basis. It was a 61 retracement. Look at this. This low to this high, 61 retracement. To Can I ask you one thing? Why we did not enter on closure of 15 last 15-minute candle? Because again, on like if you're looking at 30-minute zone, if you look at 15-minute zone, that is clear cut a breakout also. You no, have a but good so if we go on this, range. if we go on this thing, that's a nice. But right over there, we also have this struggle. So I don't want to put in this. Okay. This tiny thing where that others are still loading. Yes. Okay. So I think, boys, we are closed on 15. So this 15 is valid now. You can put a buy limit at 50. Put it buy at 50. $3940 point. Yeah. Guys, the screen पे यार देखो, मैं कुछ ज़्यादा choose your many trades के लिए. I need my own confirmation before I enter.
अगर ट्रेड में लॉस होना है तो एटलीस्ट प्लान फॉलो करके हो, है ना? Not an unnecessary loss. P9 स्प्रेड काउंट करने बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों एंटर प्लेस कर दिए अपन ने। और वैसे भी अगर तुम इसमें भी एक्टिवेट नहीं होते हो ना, तो अब तुम्हारे पास अभी भी बहुत ऑप्शन एंटर करने के। मोमेंट टू टेक आउट दिस हाई, तन अपने पास एक लेजिट चौक बन जाएगा, फिर तो अपन वैसे एंटर करेंगे। हम फाइंड सम नाइस रीजन, ये रहा, उसके बाद भी ये एंट्री आएगी। अगर ये कैंडल नीचे नहीं आती है और डायरेक्टली इसको हाई को स्वीप कर लेती है, तब भी अपने को यहीं से एंटर करने पड़ेगा। यही है चौक एरिया, सॉरी जो एफ है ना, ये वाला एरिया। दिस एरिया विल बिकम आवर एंट्री इवन आफ्टर चौक। सो या तो हम पहले एक्टिवेट होते हैं या बाद में एक्टिवेट होते हैं। और इस ट्रेड का यही लॉजिक है कि मोमेंट वी गेट एक्टिव, 20-30 पर रिएक्शन मिला, ऐसा इंस्टेंटली उस लोएस्ट कैंडल के ऊपर लेके आना है जहां से अपन एक्टिव हुए थे। It's showing some bearish trend. Are we about to get active, boys? इस आवरली का बस एक टेंशन है कि if ये उसके ऊपर न होगी तो अच्छा रहेगा। और देखो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि दिस आवरली डिड ए ब्रेकआउट, फिल दिस रेंज, गेन फॉर रीटेस्ट एंड देन अगेन ड्रॉ, ह्यूज पोटेंशियल इन बोथ साइड। बट फिलहाल अपन थोड़ा स्कैल्प मोड में, स्कैल्प करके साइड रहते हैं। Yes. USD is again going down, GU का पता नहीं, इंडेक्स ही थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो गाइस, जो 40 का बाय लिमिट था उसको डिलीट कर दो, मैं भी कर देता हूँ ताकि। और अगर लगेगा वापस वहाँ पे प्राइस आ रही तो मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर देंगे, बट फिलहाल हटा दो। I was actually hoping for 4,000. अब मोस्ट ऑफ ये 4,000 coming in this way, but to I thought spread है। today only it will come. इतना भी नहीं, ऐसा नहीं होता ना, बायर को तो ट्रैप करना पड़ता है ना पहले, A अर्ली bit, बायर्स। bit, I was a bit too optimistic. ना अर्ली Actually, when I woke up, not when I woke up, when market opened, I saw some 1 hour candle just shot up directly, 39.76. I'm like, okay, fine, 37. Okay, so that is just what Sydney just opened only. After that, I thought, okay, now Tokyo will open, considering how Tokyo expanded yesterday. Tokyo will reach 4,000. I put a sell limit at 4,000 and slept. this was the shit candle yesterday. I was literally holding buy from 50. This 15-minute order block, it shot up like 200 pips. And then after I was talking with Vijay, well, gold dropped. Then okay, let's close it. Then I close it again, and then it went to 60. Then the initial move that usually always a fake out with this gold. Then it's when it came down again, tapped this order block. See, there was one more order block right Yes. here.
And that activated Yes, us yes, like yes, yes. early in Australia Open. So that also gave you 100 pips. Came down again. It No, this that no, that actually activated us right away from after close because I was scalping till that time. and then so I took some entry from 15-minute order flow. No, in the morning, which entry I Told signed? about to activate us. It's at 50.99. We are exactly at 50, right? Guys, if you miss this entry, then I'll be done. Teacher 52. And नीतीश राय भाई ये पर्सनल अकाउंट भाई ये फंडेड अकाउंट है अच्छा ये 50 के जो स्क्रीन पे है ये तो भाई ये चैलेंज फेज है इसके लिए स्ट्रीम के लिए स्टार्ट किया है तो इसको लाइव पास करने का प्लान है और बाकी जो फंडेड अकाउंट है मैं फ़ोन में ट्रेड करता हूँ ऐसा बट ये जो करंट है ना 50 के जो दिख रहा है स्क्रीन पे ये फंडेड फेज 1 है बेसिकली इसको स्क्रीन के लिए लिया ताकि आपस में अकाउंट पास कर सकें सारे लोग Till activation, wait in March. फिर मैंने जनरल कर दिया लास्ट ट्रेड यहाँ ठीक है तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है आज भी एंड जब से स्ट्रीम स्टार्ट हुई कब की थी मैंने स्ट्रीम स्टार्ट 15/9 से तो टोटल 46 ट्रेड सो फार जिसमें कितने लॉस लगे अपने 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लॉस That's what I said. सो 46 minus 12 कितना हो जाए भाई 34 ठीक है we are around 66 maybe 65 to 70% win rate so far ये stuck ही हो गया है जीजे में कुछ खास नहीं दिख रहा मेरे को डिस्क्लेमर भी डालना पड़ेगा नीचे उस डिस्क्रिप्शन में Okay. your trades are executed on demo accounts not any financial advice something इंडिया में थोड़ा नाटक है ना वो सेबी वेबी है कि you have to be some Yes. sort of I don't know कुछ सर्टिफाइड वर्टिफाइड होता है ना that you can advise ऐसा कुछ नहीं है भाई ट्रेड ऑन योर ओन We तो आवरली अबाउट टू क्लोज इन 4 मिनट्स देखते हैं उससे पहले एक्टिवेट होते हैं नहीं होते उसके बाद इस एफईजी से अपनी if yeah, if hourly no 4 hour is also about to get closed, right? हाँ ना I do not want to be in a trade where 4 hour candle is just opening. that's a good idea काम करते हैं डिलीट द बाय स्टॉप सॉरी बाय लिमिट लेट दिस 4 आवर डू मुझे ये डाउट है कि 4 आवर भी फिल करने आ सकता है स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन ही आता है ना Exactly. Like the wick on 4 hour opening is quite unpredictable. As in, I have got screwed multiple times. That that's a good call boys so guys delete this buy limit as well
Unfortunately, there is no trade in London session. एक ट्रेड थी, we missed by 10 pips, otherwise और कोई सेटअप दिख नहीं रहा है, और विदाउट सेटअप के मैं ट्रेड में जाऊंगा नहीं कभी। वो एक पॉइंट हुई है ना, मेरे को सारे खाने के लिए क्लिक चाहिए ट्रेड में जाने से पहले। और भाई किसी को ट्रेड प्लान चाहिए, डेली जर्नल चाहिए, या फिर डेली रिपोर्ट कार्ड चाहिए, भाई डिस्कॉर्ड में पड़े हैं, नहीं मिल रहे हैं तो भाई यू कैन मैसेज मी और अरुण, ही विल सेंड यू, आकाश सेंड यू फंडेड नेक्स्ट में स्प्रेड्स कितने पिप्स का है, किस पे, गोल्ड पे? गोल्ड Hardly पे 2.2 pips. गोल्ड मेरे पास 2.2 pips. 19 है, इसीलिए मैं स्क्रीन लेता हूँ। Yes, sir. तो ये है गोल्ड, तो गोल्ड है लेस देन 2 पिप, बेसिकली ऑलमोस्ट 2 पिप्स। एंड ईयू तो 1 पिप 8 है, जीयू 5 पिप 8 है। ये ठीक है। तो गाइस स्ट्रीम में यही एंड करते हैं, एनवाई में मिलते हैं, कोई ट्रेड नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, और फिर लेकिन एनवाई मिल जाएगा अपने को ट्रेड। और आज तो ये पेयर भी बकवास चल रहे हैं ना, ईयू जीयू मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता अपने को, इनके अंदर इनमें कुछ नहीं मिला अभी बेस पे। और अब एक इशू ये भी है ना कि अपन चाहे 30 मिनट के जोन पे लेके चलो अभी, क्योंकि 30 मिनट का जोन तुम्हें ये देना पड़ेगा फिलहाल, ठीक है, ये ब्रेकआउट द लास्ट आवरली का जोन तो स्टिल यही है ना, आवरली तो लास्ट सपोर्ट यही है, इट कैन बी अ रीटेस्ट एंड देन ड्रॉप अगेन। तो ओके बॉयज, एनवाई में मिलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ आज 5:30, तो तब देखते हैं ना। मैं मैंडेटिंग ट्रांजिशन